Good evening, everyone. So, before beginning this session, I would like to introduce the panel. So, we have Advocate Ajmani, sir, who is a practicing advocate in the courts of Delhi. We have Piyush Nair, sir, who is also a practicing advocate in the district and lower court in Madhya Pradesh, and also judiciary aspirant. We have Venus Pateriya and Ayushi Shrivastava. These both are uh, young law grads who are judiciary aspirants. So we are going to discuss on this 3 year mandatory uh, requirement for appearing in judiciary examinations. And before beginning everything, the discussion, I would like to put one question: is it really necessary? Because today I was reading LinkedIn posts and I read one such post where a practitioner, I think he or she is a criminal practitioner, and they mentioned ki we need mature judges, we need mature magistrates, and because of that, this 3 year practice is required. So, sir, Lalit sir, I would like to start with you. What is your take on this? Okay. I personally, to be very honest, appreciate this call. I know that's an unpopular call among students, and considering that I have also seen struggle in my life, so I understand the pain that the law students are facing through this call. But as an experienced trial court lawyer, I appreciate the judgment for three reasons. Firstly, that in trial court it is not law only that we see, it is the procedural thing that we also appreciate. And a lot of time there are so many procedural lapses which usually lawyers take advantage of, and it takes time for judges to get used to those procedural requirements. And that is one of the main reasons why perhaps Supreme Court has considered this call. The second is, if you consider other countries, as whether this practice is is unique to India or whether this practice is accepted elsewhere, you will be surprised to know that many countries have already followed this culture. UK, Russia, if I'm not mistaken, US, Kenya, even countries like Pakistan and and other countries also, they have this policy of having 2 to 5 years of minimum requirement for aspirants to become judge. And third reason is that once you appreciate the understanding how bar functions, that is how lawyers usually practice, and what are the difficulties that lawyers actually face with the client, especially young lawyers. So it gives slightly more advantage to the bench to appreciate those nuances and understand how things are going on. And these three are, I guess, main reasons why I also welcome this judgment and having this 3 year mandate. Okay, I assume all four of us have a different perspective. I would. Yes, I can see from the faces that everybody is just looking. They are noting down their points and okay, on this point, okay. So most welcome on that also. Piyush sir, what would you say? I to disagree on the judgment, but there are some positive aspects as well as some negative aspects to it. Uh, अगर हम इस जजमेंट की एक्यूरेसी पे बात करें तो ये जजमेंट चाहता है कि 3 साल प्रैक्टिस हो जाए, बट एट द सेम टाइम ये क्रेडिबिलिटी के लिए मांगता क्या है? किसी भी 10 years plus एडवोकेट का सर्टिफिकेट विच इज एंडोर्स्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स, जो कि जिसके जिसके पर्टिकुलर अप्रोच है वो आराम से लेकर आ सकता है। Hmm. दूसरी बात, इससे होगा क्या? अब इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो एमपी हाई कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस जो मलिमत साहब है, वो यहाँ पे 70% रूल लेकर आए, और उसके साथ साथ 70% रूल के साथ साथ ही ऑल्सो ब्रॉट इन कि या तो 70% लेकर आओ या फिर यू हैव 3 years प्रैक्टिस, Hmm. जो कि उस समय भी काफी इक्विटेबल नहीं था। ये भी सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अलाउ कर दिया। Hmm. और ये भी एविटेबल था कि ये भी मतलब अज्यूम्ड था कि सुप्रीम कोर्ट 3 years रूल लाएगी करके। लेकिन अब द मेजर आर्ग्यूमेंट, ये 3 years रूल क्यों लाया जा रहा है? द मेजर आर्ग्यूमेंट इज कि जो एडवोकेट्स हैं, दे आर वेरी दे आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय द जुडिशरी। क्यों? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो जूनियर जूनियर जो जजेस आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं एडवोकेट से, इवन सीनियर एडवोकेट से, कि उनके पास नया नया ईगो आता है, नया नया ईगो लेकर आके बेंच में बैठ जाते हैं, एंड दे
मतलब बिल्कुल ही सीनियर एडवोकेट्स को कुछ समझते ही नहीं है। इस बात से एडवोकेट्स आर वेरी एग्रीव्ड, और दे वांटेड कि हाँ एक मिनिमम प्रैक्टिस हो। आज भी मैं कोर्ट में घूम रहा था, एक सीनियर एडवोकेट आफ्टर लंच सीनियर एडवोकेट थे, बगल में ही थे। उनने जज को थोड़ा लेट हो गया था, अराउंड एंड अराउंड 5-10 मिनट लेट हो गया था। उनने बोला इसलिए ही 3 साल प्रैक्टिस आना जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर वो प्रैक्टिस सही में करें, तो ये सब चीजें हाँ कि उसको पता चलेगा कि यार बार में ऐसा चलता है, इतना डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है और इतना डिफिकल्टी फेस करके आना पड़ता है, तो वो समझेगा, रिस्पेक्ट करेगा। बट इनने सिचुएशन ही ऐसी ला दी कि मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा, बस 3 साल वेट करेगा, घर पे बैठ के पढ़ाई करेगा, एक कोई एडवोकेट पकड़ लेगा, एडवोकेट से सर्टिफाई कर देगा, दो चार वकालतनामा ला देगा। अब इसमें बस इतना है कि जो जुडिशियल ऑफिसर एंडोर्स करेगा, अब जुडिशियल ऑफिसर जो एंडोर्स करेगा वो क्या देखता है क्या नहीं देखता है। हो सकता है कुछ स्टेट्स में वो बोले कि वकालतनामा लेकर आओ, कुछ स्टेट्स में वो बोले कि वकालतनामा नहीं, ऐसे ही एंडोर्समेंट हो कि इतना वर्कलोड होता है जुडिशियल ऑफिसर्स के पास भी कि डायरेक्टली वो साइन कर देगा और एंडोर्समेंट हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अब इससे वुमेन पार्टिसिपेशन जो अपन इतना बोलते गाते रहते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन काफी लेस हो जाएगा। राइट। अगर चंद्रचूड साहब होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो इस बात पे डिसेंट देते कि वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का लॉ, फिर उसके बाद 3 साल का प्रैक्टिस, फिर उसके बाद तुम आओगे, और फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो, हो सकता है आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाए। तो ये ऑन इंडिविजुअल पॉइंट, हाँ ये हो सकता है वीक पॉइंट हो सकता है स्ट्रांग पॉइंट हो, लेकिन ऑन इंडिविजुअल पॉइंट इसको काउंटर ऐसे किया जा सकता है कि हाँ ओवरऑल ओवरऑल इंटरेस्ट देखा जाना चाहिए कि हाँ एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स आए, एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट जज बने, और फिर उसके बाद। लेकिन क्या जो एक्सपीरियंस लेता है, क्या वो सफिशिएंटली नॉलेजेबल भी होता है? क्योंकि आप जैसे वी वर डिस्कसिंग कि जो एक्सपीरियंस तो आप ले आए, लेकिन आप क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल पूछ रहे हो। और सेम चीज एक और चीज की, सपोज जनरल पैरेलल्स में भी आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो ये होता है कि 7-11 लगा दी, 90 सेक्शन 91 लगा दी, लेकिन उसके अंदर क्या है मैक्सिमम एडवोकेट्स को पता नहीं रहता। उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज की काफी जरूरत हो जाती है। दूसरी बात कि आप कब से कैलकुलेशन कर रहे हो, ये डेट, इस पे भी एक इशू फॉर्म हुआ था। अभी जो कब से कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे अगर दिल्ली दिल्ली के बारे में अगर आपने एनरोल किया है तो उसकी डेट अलग होगी, एमपी के बारे में अगर आपने एनरोल किया तो उसकी डेट अलग होगी। जैसे अगर अपन एमपी की बार की बात करें, तो एमपी के बार में जो रिसेंट बैच था, उनने अराउंड एंड अराउंड जून में अपना एनरोलमेंट के लिए फॉर्म भेज दिया था। लेकिन एमपी के बार वॉज दैट बिजी कि उनने अप्रूव किया दिसंबर में। अब उनका तो 6 मंथ का लैग हो गया। लेकिन जो दिल्ली के बार और बाकी स्टेट्स में तो ऐसा नहीं है। तो आप ऑल इंडिया यूनिफॉर्म कैसे लगा सकते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया एमपी के बार वालों के साथ। भले ही दिसंबर में जाके उनका हो गया, लेकिन 6 महीने वो लेट अपीयर कर पाएंगे जुडिशरी राइट। एग्जाम को लेके। आई तो थिंक सर ये बहुत एक सारे पॉइंट्स है, हम्म, अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं वरना हम भूल जाएंगे कुछ पॉइंट। सो women participation वाला पॉइंट है, उस पे वी हैव आयुषी टू गिव हर व्यूज ऑन, बिकॉज शी इज an aspirant who is preparing for past 2 years and she might face the issue जब women participation वाला आएगा। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन बिफोर वी गो इनटू women participation वाला इशू, जो कि ललित सर ने भी एड्रेस किया, आपने भी एड्रेस किया, कि जो यंग मेंबर्स ऑफ द बार होते हैं जो डायरेक्टली लोअर जुडिशरी में जाते हैं, उनके पास या तो प्रैक्टिकल नो हाउस की थोड़ी कमी होती है और थोड़ा एरोगेंस या जो भी बोले। तो क्या हम ये चीज जुडिशियल ट्रेनिंग के टाइम पे एड्रेस नहीं कर सकते थे? उसके लिए 3 years प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, मतलब वॉज इट रियली दैट नेसेसरी? दिस इज माई क्वेश्चन, बट I I think यस। on this, as far as the conduct of judicial officers are concerned, I might say that this might not be a strict ground, because in various part of the countries usually there is a cordial relationship between bar and bench. Of course, there are certain instances when we feel that judicial officers are not paying due respect to the lawyers, and I'm sure the judicial officers have the very same reasoning. यस। But that is a very minimal percentage if we talk राइट। about in general sense. But having regard to the practical nuances, yes, I do agree. And whether the judicial training is sufficient or not,
I think one or couple of years of experience are indeed required. And on this, while we are talking about 3 year mandate, we should also talk about, if I, to the best of my knowledge, there is a petition pending before the Honorable Supreme Court, wherein 5 year law might be curtailed down to 4 year law. So Okay. 1 year will be saved from there. Hmm. So this has added 3 years. So technically, it's a 2 year additional thing for future lawyers. So I guess if we consider these two years, it's uh, it's much required for trial court lawyers to appreciate it. Now, one more thing. I know that Yes. there are so many things that are going on. Yes, yes, sir. Let's say that those advocates who want to argue and appear in Supreme Court, there is a mandate of appearing for AOR exam, and in order to just take that exam, you need to service 1 year with an AOR. Hmm. uh, 5 years plus 1 year, or including 1 year within your. So even to appear just to argue a simple case before Supreme Court or just to write your name, you have to undergo 1 year practical training to that effect. So if you are considering this 2 or 3 years with judicial officers, we should also consider that the lawyers who, after attaining 5 years of experience, they still have to undergo 1 year of training to appear before the apex court. So there are so many things. If we consider, it's not just this is out of a sudden 3 year picture has come in. So I consider that this is a welcome move. Yeah. Okay, sir. Sir, agreed. There are so many, if something is done, it has some reasons because the Apex Code is not something Yeah. without considering these things. But again, when we consider about the women participation thing, so uh, as of now, law is of 5 years, or if somebody is doing it after graduation, then 6 years. So they are probably 24, 25 by the time they have completed their law. Now 3 years of practice. And कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ जो एग्जाम नोटिफिकेशन इट इज नॉट ऑल्सो नॉट वेरी सर्टेन कि कब किस स्टेट के एग्जाम्स होंगे. कभी 2 साल में नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी 3 साल में नोटिफिकेशन आ रहा है. अगेन सिंगल डिजिट वैकेंसी, रिजर्वेशंस, अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो अगर हम बहुत बेस्ट सिनेरियोज भी कंसिडर करें, सो अ वुमेन हु वांट्स टू, anyone, women, men, whoever wants to appear for the exams, they would be minimum of 27, 28 years old by the time they appear for the exams. So many women who want to appear for the exam or who want to continue practice might face an issue because we have societal pressure, marriage, a lot of different things. So in on this issue, I would like to hear Ayushi's perspective. Actually, this is the issue. 5 years plus law degree, then 3 years litigation, then uncertainty that पहली बार में आप select होगे या नहीं, तो बहुत कंसर्निंग हो जाता है. अगर ये पहले से पता होता, प्री प्रिपेयर्ड होते हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स के इतना टाइम लगेगा, तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट इशू, दैट मच इशू. बट अभी पता था कि इतना ही टाइम है, 2-3 साल और लगेंगे, जो भी होगा. बट अभी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और पेरेंट्स भी शायद अब एग्री ना करेंगे कि इतना टाइम आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो. और मैरिज प्रेशर, मेरे तो बहुत सारी फ्रेंड्स भी अब इस वजह से कंसर्न है कि उन्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा. 27-28 फॉर देयर टाइम लिमिट, कि आप तब तक कुछ कर सकते हो तो करो, अदरवाइज आपकी शादी करा दी जाएगी. अभी भी वही है कि 28 तक वो शायद सारे पेरेंट्स वेट भी ना करें, इंक्लूडिंग माइंड. तो बहुत ज्यादा ये कंसर्निंग हो जाता है. और वुमेन का पार्टिसिपेशन तो फॉर श्योर इसमें लेस होगा ही, इस रीजन से. सर ऑल्सो 3 years प्रैक्टिस एक इश्यू इसलिए है क्योंकि देर इज वेरी लो पे. मतलब इनिशियल 1 year में तो नो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो पे होता है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बस कवर होते हैं. सो इवन दैट इज एन इशू कि जिनको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करनी है या फाइनेंशियल प्रेशर है जिनके ऊपर, तो वो तो प्रैक्टिस में जाएंगे ही नहीं. या फिर अगर गए भी तो 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद दे वुड नॉट हैव द टाइम टू प्रिपेयर एंड देन सिट फॉर द एग्जाम. बिकॉज जो प्रिपरेशन है, जो एग्जाम का पैटर्न है, दैट इज वेरी थियोरेटिकल एज पीयूष सर मेंशन. और हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो बहुत मिनिमम सेक्शंस में या कम, मतलब कंपेरेटिवली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो हम बहुत कम लॉज के थ्रू ही प्रैक्टिस, लॉज में प्रैक्टिस करते हैं. सो अगेन दिस वुड बी एन इशू. बट बिफोर गोइंग बैक टू discussing these things, I would like to hear Venus's perspective. थैंक यू रश्मि. सर आपने एक वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला और मेरे को बहुत अच्छा लगा. वो ललित सर ने बोला था एक्चुअली
कि जो नेक्स्ट आने वाली है जनरेशन, उसके लिए ये चीज है कि हो सकता है कि 4 ईयर की आपकी एलएलबी हो जाएगी और उसके बाद 1 साल आपका प्रैक्टिस इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। सर, व्हाट आई थिंक कि पहले ये चीज होनी चाहिए थी, उसके बाद आपको 3 ईयर मैंडेट करना चाहिए था। व्हाट आई थिंक, मैं बिल्कुल आपको सुनना चाहूंगा और आपका भी व्यू सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उतना ज्यादा अवेयर नहीं हूँ चीज़ों से जितना आप हो सकते हैं। सर, उसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम लोग जिस फेज में हैं, हम लोग अभी नए नए ग्रेजुएट होके निकले हैं, या पीयूष सर जैसे हैं, पीयूष सर कुछ 2 साल से आई थिंक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनके लिए एक हद तक इजी तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, आई एग्री, बट एक हद तक इजी हो सकता है। बट सर, कुछ ऐसे भी हैं एस्पिरेंट्स जो बैठे हुए हैं कि सिर्फ हम जुडिशरी देंगे, हम 3 साल का ड्रॉप लेंगे, और सर एटलीस्ट कोर्ट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था कि इमीडिएट इफेक्ट ना हो इस वर्डिक्ट का, ताकि जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले हैं उनको थोड़ा सा टाइम पीरियड मिले, या जो प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है उनके लिए इमीडिएट इफेक्ट ना होता। ऐसा हो सकता था कि 2028 से या 2027 से इफेक्ट में हुई ये चीज। आई थिंक ये भी चीज, इस चीज को भी कंसिडर किया जा सकता था। तो मैं जानना चाहूंगा सर, क्या मतलब आपका व्यू क्या रहेगा इस चीज पे? Indeed, I certainly agree. Those two issues should have been decided at one go. This 4 year law. Firstly, whether law would be curtailed down to 4 year or not, that is uncertainty. Though there is a possibility, but we can't be very sure that is going to happen. So I do agree that these two issues should have been decided at one go, and accordingly any new amendment should have been affected after a couple of years or after 1 year, because those people who have been preparing for the exam, they might have dropped various good offers for working with good lawyers or good firms, etc, etc, etc. So I think yes, this is a major drawback of the judgment, that this immediate effect of, and reinventing the entire wheel, especially for the people who are in their fourth, fifth year, or probably they are those who are just freshly graduates. It's a very harsh for them, and probably unreasonable for them also, because they have a different mindset, they have sacrificed, because law is a pool of various opportunities and various streams. I guess 10 or 11 opportunities, different fields are there for a law student, whether it's law firm, litigation, international law, etc., etc. Each and every field has a different option. So, firstly, law student is itself quite confused during his or her law school till the end, and only after having one or couple of year experience, he or she decides as to what he is going to adopt. So putting the entire thing just at one go, that I certainly agree, that is not appreciated. But having said so, this 3 year law was required, but this should have been adopted after a year or after a couple of years, while deciding this 4 year law or 5 year law thing. Yes, that I certainly agree. That I do not defend. Sir, I also want to add this key. One more thing should have addressed at least कि एक minimum stipend mechanism हो to support young advocates. What is your view on that? Okay, why does a lawyer join a senior chamber, and why does a person work within established law firm? There are two major different reasons behind that. If you are working with a lawyer, you are not working to to work throughout your life as a junior advocate. You have joined that particular chamber to understand and to learn the art of litigation, so that you can start your own practice, just like a business, that you have worked with somebody for 1 year, couple of years, so that you can start your own practice. If you want a good pay, there are so many opportunities with established law firms for that. Now, second point, to put up a fixed stipend. Let's say if a person is giving 10,000, for example, and if he is paying rent of 20,000, that becomes 30,000. Overheads another 10,000. 40,000 goes for that. So if a young lawyer is earning 1 lakh rupees, and there are very limited number of lawyers who are earning in six figures.
So 40% of his expenses go just like that. So if you put 20 or 25,000, for example, and if a person is earning 1 lakh rupees, he might not be able to, hire any junior lawyer, or he might indulge in some different activities of, showing something else and paying something else, and that will, give rise to various problems. So I understand, and I appreciate it. In fact, at our office, we also try to pay as much as possible, even to interns also. But this is a practical problem for, especially for lawyers who have just established or who are just establishing their practice. So people who are earning in lakh, 1 lakh, 1.5 lakh, it's very difficult for them to give reasonable amount of money to juniors advocate. So for fixing a particular amount of money, it's very difficult for both of them, and especially the intention of people who are joining litigation chambers is that they are starting their own venture in future. So we have to appreciate that point also, because a lawyer, if lawyer spends couple of years to train that person, and after couple of years he leaves it, so it puts him in a quite flux situation. So we have to see, this is a practical issue that we hardly address. Of course, we keep Right. debating about that lawyers should be getting this much amount of money, this much amount of money, but if you understand the mathematics, if we just calculate the maths, it's hardly very difficult for lawyers who are not earning at least 2 lakh rupees per month to give a decent pay to junior advocates. So, but yes, now I'm stretching on. I'm sorry, I'm taking a bit on this. But now, if a judicial aspirant is forced to work with a lawyer, his aspiration would not be to start his own practice. Right. His aspiration that after 2 or 3 years, he or she would like to take the exam. Now he or she should be handsomely paid, because if she or he works with a law firm, he might not get even a single hour to study for the exams, because with a good law firm you end up spending 12 to 14 hours per day. So yes, now on this aspect, there is a quite difficulty that you are forcing somebody to put 3 years into practice, but you are not paying, or the market conditions are not that much that he or she would be able to survive that much. So I guess this is going to be a challenging situation for students also. Right. So now I think कि जैसे law students had this option कि either they'll go for litigation or judiciary or corporate law. But now, or many other options they had, but now judiciary is not one of them. Either you want to be into litigation or you don't want to be. If you are into litigation, then at some point after, let's say, 3 4 years, you will then decide whether or not you want to go into judiciary or not. Just like they used to do for higher judiciary examination. Because let's say I am graduating today and I decide that I want to appear for judiciary examination after 3 years. I don't know what my circumstances will be then. And I start practicing, I don't enjoy it. Maybe I don't survive 3 years and then I'm left with nothing. So that could be an issue as well. Yes, this may take some time to sulk in, because this after 3 years, whether you would be in a time, whether you would be in a right frame of mind to appear for the exams, because if you are studying till 5 years, you have the habit of putting 6 hours, 8 hours in front of books. But let's say if you ask me to prepare for any exam, might be very difficult if you compare me with yourself, because it would put me in a harsh situation to to adjust my psychology, to adjust my temperament altogether. So yes, this again will add something to it. And after 3 years, of course, once you slog 3 years in a particular field, you might start enjoying that particular thing. So again, Yes. this will put you in a confusion whether to give another 2 years to litigation and then start your own, or to challenge your luck and appear for the judicial exams. So I understand these two practical issues. On practical terms, yes, it's a difficult decision to follow. And I'm seeing probably various review petitions that are going to be filed in Supreme Court, especially by students. Yes. So we were discussing कि practice में एक बार जाने के बाद we are not sure कि we'll be able to again study
एंड सिट फॉर द एग्जामिनेशन। और 3 साल के बाद क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं ये भी हमको नहीं पता। राइट नाउ पीयूष सर इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एंड प्रिपेयरिंग। सो सर, हाउ इज इट गोइंग? इज इट पॉसिबल टू come back from court and continue your studies and preparation? डिस्क्लेमर कि मैं बहुत अच्छे चेंबर से आता हूँ, पर ऑनरेबल कोर्ट प्लीज हियर द प्लाइट ऑफ द लॉ एस्पिरेंट एंड जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट। ये जो जजमेंट है, ये ओपन्स द गेटवे फॉर एक्सप्लॉइटेशन। अब मैं तो 6 बजे तक आ जाता हूँ वापस, मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो है। उसके बाद आके आई हैव इनफ टाइम टू स्टडी ऑल्सो। Hmm. पर अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो सुबह जाते हैं और रात को 1 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, एंड स्टिपेंड के नाम पे उनको मिलता है जीरो, नथिंग। और सीखते सीखते हैं, ठीक है सीखना, लेकिन क्या है कि जो मतलब अपन लेबर लॉस की बात करते हैं, लेकिन एडवोकेसी में देर इज नो लेबर लॉस। हर कोई इंसान सीखने के पर्पज से आता है तो सीखता है। लेकिन जो एडवोकेट बन मतलब जिसका मेन एम एडवोकेसी करना, एडवोकेट में सीखना शुरुआत से यही रहा है, उसके लिए इट इज वेरी गुड। चलो जीरो स्टिपेंड मिल रहा है, लेकिन उसको सीखने का काम मिल रहा है, काम सीखने का मौका मिल रहा है, एंड आफ्टर सम पॉइंट ही विल यूज दैट इन एडवोकेसी। बट कॉलेज टाइम से ही हमारा मेन एम ये रहा है कि वी आर अ जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट। हमने ना इंटर्नशिप ढंग से करी है और ना ही हमने कॉर्पोरेट में इन्वॉल्व हुए हैं। वेरी वी ट्रू। टोटली फोकस्ड ऑन आवर प्रिपरेशन, एंड अभी भी हम प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं। एक्सप्लॉइटेशन काफी जगह पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अगर हम कोर्ट जाके सिर्फ और सिर्फ फोटो कॉपी निकालते हैं तो क्या ये एक्सपीरियंस काउंट होता है? क्या हम कोर्ट जाके अगर सिर्फ फाइल उठाते हैं तो क्या ये एक्सपीरियंस काउंट होता है? अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की ही बात है, मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि क्या हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो मेरा ये मानना है कि अ लॉट ऑफ स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश जुडिशरी या फिर दिल्ली जुडिशरी पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पेपर रहता है उसका। Hmm. हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में प्लेंट लिखने को आता है, रिटन स्टेटमेंट लिखने को आता है, काफी ऑर्डर राइटिंग भी आता है, इवन जजमेंट राइटिंग भी आता है। तो Hmm. आप अगर एडवोकेट हैं तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आप इजीली यू कैन फ्रेम, Hmm. बट यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ अ जज ऑल्सो। आप ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, इवन छत्तीसगढ़ जो जजमेंट राइटिंग तो हर जगह आता है। Hmm. इवन दिल्ली का जो पेपर रहता है वो प्लेंटिफ डिपेंडेंट लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। अगर अपने को दिल्ली का अपियर करना है, दिल्ली जुडिशरी अपियर करना है, तो काफी प्रैक्टिकल पेपर है। उसको कोई थ्योरेटिकल वाला पर्सन पढ़ नहीं पाएगा। आज सीजीआई सेड कि बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ। आज सीजीआई ने जो स्टेटमेंट दी दैट बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ, प्रैक्टिकल नुआंसेस आने चाहिए। अब ये हो गई हाफ प्रैक्टिकलिटी की बात। हाफ प्रैक्टिकलिटी ये कि यू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ द एडवोकेट, यू अंडरस्टैंड हाउ एन एडवोकेट प्रिपेयर एंड फील्स कि मैं कोर्ट के सामने आके आर्ग्यू कर रहा हूँ और मेरे को डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, और मेरे को कितने कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जब मैं एडवोकेट हूँ, क्या वो जज समझता है? ये जो चीज समझने की बात है, आई थिंक ये 1 साल में भी हो सकता है। एक मिनिमम टू मिनिमम 1 साल में भी हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1 साल वॉज इनफ। Hmm. दूसरी चीज कि प्रैक्टिस करके आके बुकिश नॉलेज गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे बुकिश नॉलेज ही आएगी मैक्सिमम एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। इट इज ऑल बैरक, फुल बैरक बेस्ड पेपर आता है। थोड़ा बहुत केस लॉस अगर अपन डाल दें तो एडिशन, लेकिन मैक्सिमम जो पेपर आता है उसमें अभी तक तो बैरक बेस आता है, एमपी को छोड़ के, इस साल को छोड़ के एमपी का पेपर। अब डिफिकल्टी यही है कि प्रैक्टिकल अगर आपने बोला है तो क्या प्रैक्टिकल नॉलेज सही में गेन होता है कि नहीं होता? द क्वेश्चन arises and the question is stand still. Right, because like you mentioned कि बहुत सारे यंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो तो फोटोकॉपी करा रहे होते हैं या फिर इधर उधर बस फाइलिंग कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम बैग्स रख रहे हैं इधर से उधर या चाय ला रहे हैं। मतलब वी यूज इट एज जोक्स बट दिस इज द रियलिटी ऑफ मेनी यंग प्रोफेशनल्स। एटलीस्ट शुरू के 1-1.5 साल तो यही करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। और अगर आपको अच्छा चेम्बर मिल गया, दैट इज वन योर लक, एंड सेकेंड कि आपके कनेक्शंस कैसे हैं। So Right. yeah, I was observing a lot of reactions from both Venus and Ayushi. Venus, you go first. ओके सर, जैसे आपने बात की रियल एक्सपीरियंस सच में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज थी जिस पे ये सारा डिस्कशन हुआ है, हमने जनवरी से लेके अभी तक मई तक 6 महीने 5 महीने का फुल वेट किया है।
100% एम्बिगिटी में हम डले रहे, अपनी तैयारी में लगे रहे। सर, मेरे को ऐसा लगता है, या सबको ही ऐसा लगता है, या ये सच होगा कहना, इज इट ट्रू टू से कि जुडिशियल जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है। अगर आपके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना हम जजेस को पहले आपका जो 3 स्टेजेस, वन ऑफ द हार्ड एग्जाम है, उसको जब कोई एस्पिरेंट दे के आ रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग की जाए। मानते हैं कि 3 साल की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट आई थिंक कि वो ट्रेनिंग जुडिशरी को एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि हम पहले से करके आएंगे, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं हो सकती है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तब भी नहीं कर पाएंगे। हम 3 साल कहीं किसी सीनियर एडवोकेट से या किसी किसी भी लिंक, किसी भी तरीके से हम उसको कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे कि भाई हमने 3 साल एफिडेविट पे साइन कर दिए, हम चले गए कोर्ट में, इंडॉल, ये सब हमने कर लिया, हमारे पास अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो व्हाट आई थिंक कि जब आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी अच्छे जजेस को निकालने के लिए। Also, a lot Right. of aspirants had either academy as their backup option or corporate as their backup option. अब क्योंकि हमको फोर्स कर दिया जा रहा है कि आपको तो लिटिगेशन करना ही करना है, उसके बाद आप अपीयर होंगे जुडिशरी में, अगर आपको वो क्लियर नहीं होता है, नाउ यू आर फोर्स टू ईदर कंटिन्यू लिटिगेशन विच यू माइट और माइट नॉट लव, और यू हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्योंकि अगर आपको एकेडमी में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, आपके पास फिर वो एक्सपीरियंस जीरो काउंट होगा। तो एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस फंस चुके हैं, आई थिंक। आई वुड लाइक टू नो सर, आप मतलब ललित सर, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द एस्पिरेंट्स जो स्पेशली आर बैच, बिकॉज हमारे जो सीनियर्स हैं दे हैव 1 ईयर 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस इफ दे हैड स्टार्टेड देयर प्रैक्टिस राइट आफ्टर दे ग्रेजुएटेड। हमारे जो जूनियर्स हैं दे स्टिल हैव a year or two to decide. Okay. Uh, but See, our the batch is in basic, this dilemma. Yes. yes. See, the basic function of a judge is to hear both sides and then accordingly pronounce a order. Now, what we are discussing is one side, that is the students who are facing problem. Yes, there are so many problems that especially this batch and the fourth year batch will be facing. I do agree, but Yes. we also see the other aspects, why whether it's better for judges to have 3 years of experience or not. So let's discuss for a while, and then I'll come to this Yes. again. Sure. See, if a person who is just graduated, like say 22 or 21 or 23, he or she might not be well versed with the psychological aspect to handle matrimonial issues. For example, if an issue involving 10 family members, having sister-in-law, brother-in-law, and so many forms of violence is there. So, person who has no knowledge of how this thing gets handled practically might not be able to appreciate how these things could be adjudicated well. And second, we also need to see that it is the decision, it is the life of the people who are at stake. It is Yes. not just one job, it is not a job at all, it is a service that we are rendering to millions of people who have slogged their so many opportunities, and at last they come to the court. Right. So it is a service which we should consider. It is not a job option. For practical purpose, for law students, yes. But on the other hand, it is the services that are being rendered by judges to millions of disputes. For example, if a 10-year-old litigation is going on before magistrate court, and 1,000 pages and at least 15 people are there, and the situation, let's say that who judges who get who clear the exam at the age of 24, they are not married, they psychologically they do not appreciate, or they do not have the psychology to understand this complex matrimonial issue. They might not be able to understand the nuances as compared to the people who have 3 years of practical or non-practical. I'll come to that also. 3 years of experience. So considering the importance of that seat, 3 year is something that will not give you only the practical exposure, that will also allow you to psychologically and emotionally develop and understand the various issues, or business transaction, matrimonial issues, etc., etc.
Now, second issue that that we are discussing, whether the practical exposure is going on or not. I think it totally depends upon person to person. I keep my example that I didn't know anyone. I took 25 printout of my CV, knocked door to door of advocates, found out after 3 months of deliberate diligence, I found very good advocates who were ready to allow me to work with them. And believe you me, it's much higher than taking printouts or handling the files, etc. It totally depends upon the person. Yes, there have been scenarios where the people have faced it, but it largely depends upon person whether he wants to learn this aspect. And this is an era of information as well as AI. Lot of things that you can easily learn through YouTube and this AI. So gone are those days when you need to slog for 6 months, 1 year just to understand how a simple thing works. So if you work well for a couple of years, 1 years, you would be in a very better situation as compared to a fresh law student. So these two, three things we also need to understand. Now, considering these two things, on one side, law students are facing issues. On the other hand, people are getting slightly more mature judges. I prefer the second one because it is the services that are being rendered to millions of people, and people in India knock the doors of courts only when they have exploited all other opportunities. So, at the last resort, the people who are rendering services, they should be mature enough to understand each and everything, and that is one of the reasons why Supreme Court has also, put this embargo of 3 year thing. So, this is a harsher decision for fifth year, fourth year law students, but this is perhaps a much needed change and much needed move that is required for the people who have approached courts for their decades old litigation and so much and so forth. Right. So, but what Very good point. should we do, like the aspirants? Because Okay, let's firstly, say, yes, see, just if continue. if you totally disagree with this judgment, for example, now think like a lawyer. If you are not well versed with, or if you are not comfortable with the judgment, whether law allows you to challenge it or not, why aren't you thinking in that sense? Hmm. If law gives you the option that that you can challenge, there have been so many instances. There are thousands of cases which are being filed by students and students associations, and a lot of times the students have seen different judgments after challenging that. Now that's point one. Let's say that if you do not go ahead with that and understand this is going to be the reality, Yes. by and large, if I see, people generally take 2 years time even after graduation to clear the exam. That is my, just I would say, Hilwa Observation. observation of so many aspirants. So 2 years generally that people end up giving. So it is 1 year additional that a person has to and whether a person is required to work with a chamber or whether a person is required, or whether a person can work with a law firm. I guess with passage of time, this thing will be cleared. And I haven't read the judgment. I didn't get the time today, but I guess the Advocates Act was to be amended. There was a provision, what is known to be as practice. If you are working with a law firm, that experience will also be termed as practice. So I'm very sure of that, though not very confident because I haven't read word to word judgment, that working with a law firm will also be termed as your experience for your judiciary, because those people who are working with the litigation team of a law firm, they also appear before court, they also draft, they also counsel with the client, so they also perform majorly the very same thing which people with law chambers do. So I guess that whether to join a law firm or whether to join a law chamber, that might not be the issue, but yes, it's going to be slightly difficult. But practically, it's one year that is being added Okay. to that. So the thing is, ki students used to take 2 years to clear the exam. Now after 3 years, they are going to appear, and they might not clear in the first attempt. So that is one issue, and we understand the importance of the experience. And uh, I personally think, no matter how many review petitions we file, this is going to be the final judgment. This is my personal opinion because
just like how you mentioned कि it is the larger public interest कि वो एक service है which is Somewhere affecting down the line, millions of people. you also feel that it's in the larger public interest So that 3 year mandate is there. I would say this is not in my. I was not thinking about that. After you mentioned, I now agree that this might be. This is in the larger public interest, but there are few things which must have done before implementing this. मतलब जैसा वीनस ने बोला था कि कुछ टाइम दिया होता 27-26 से वो इम्प्लीमेंट होता अभी एक पहले थोड़ा टाइम मिलता जो एस्पिरेंट्स है उनको अपनी मतलब कोप करने के लिए और कुछ और चीजें जैसे मे बी स्टाइपेंड फॉर द जुडिशियल एस्पिरेंट्स और समथिंग जो स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता देन इट वुड बी बेटर ऑल्सो अबाउट द सिलेबस लाइक पीयूष सर मेंशन की कुछ जगह का सिलेबस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कुछ जगह का थियोरेटिकल है तो वो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते तो बहुत अच्छा होता आई डोंट थिंक एनीवन वुड डिसएग्री विद द एक्सपीरियंस पार्ट जस्ट द थिंग इज कि एस्पिरेंट्स अभी बहुत ज्यादा उस मोड में कि यार हमारे साथ तो गलत हुआ है और हमको तो नहीं पता क्या है ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हमको एग्जाम देना है क्लियर करना है तो वो जोन में नाउ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग जो हो चुका है नाउ व्हाट वी कैन डू बिकॉज पहले अकेडमिया एक बैकअप ऑप्शन होता था या कॉर्पोरेट बैकअप ऑप्शन होता था नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन पार्ट जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टक हो चुके हैं व्हाट कैन दे डू नाउ See, I would like to reiterate one of my points. Though you have made up the mind that even after review petition, the decision is going to be the same. Chances are there, yes, but we have seen various review petitions which have actually curtailed down, or which we have, which we through those petitions have changed various calls. So if law students are agree with this, so I, as a lawyer, I suggest that you have the option to take your luck before the Supreme Court through review petition. That is one. Second, let's say if it stays there for 1 year, for a couple of years, I would say that your studies should take the back seat while keeping a hold on it. But you also understand and you also focus on taking good practical experience, whether it's with law firm or whether it's with law chambers, because that is what it is. If you have to spend 3 years with a law firm or law chambers, you can't be mulling over around that, that you could have appeared just after your 5 years, you could have appeared just after your 5 years, because that is not going to happen. So for one and couple of years, you just focus on the practicalities that a law firm or law chambers will give you. And after after 1.5 years, you start focusing on your studies once again and utilize that practical experience. And now I feel that the exams of judiciary will also be molded in such manner that your 3 year practice shall be called upon along with the theoretical knowledge. So 1.5 year, don't treat it like that that's an embargo, that you have to wait for 3 years only, then you will focus it on that. Stay in present, work for 2 years, and then start juggling around 2 years. Now, taking another example of other profession, take the example of CA. It's hell lot of difficult to clear the exam. Even after clearing the 2 stages, you have to undergo 1.5 year of articleship, yes and then you have to appear for the final exams with no guarantee. People slog their 10 years just to get that tag of CA, yes and then they start working on their own. Now, if you are putting so many restrictions for a CA and allowing any 5 year law student to sit and decide every important issue of millions of people, I think we are treating two very important positions in different angles altogether. What I also suggest that it should be very difficult for law students to clear the bar exam, so that it becomes a very prestige and very serious positions for law graduates to become advocates also. So why this embargo or why this obligation is created, we also need to see that the importance that it carries with that. And law students should appreciate it while facing this financial difficulty. Let's say who are facing a lot of difficulties on financial terms, they should work with people or law firms who are paying them well. There is no second thought of that. On the other hand, if you think that that you might be able to manage
something with minimal or basic pay, that you can consider law chambers, because law chambers allows you to have some liberty to focus on your studies also in initial days, and then while appreciating how judges function on day-to-day basis. And also there is one thing, you can also consider of becoming a law researcher with a law judge. That is also included in this 3 year thing. So that is not excluded. Let's say if you work with one or couple of years with a judge, so that experience will also be termed. And in that fashion, you can also make your call whether to sit for the exam or not, because I have a few knowns who are sitting in those chairs, and they are not, a few of them are not very happy, or a few of them might have couple of big problems while taking up this call. So this has also created one big opportunity for law aspirants to understand the difficulties that this position carries, because lot of remuneration options, lot of prestige is coming around, but it's a lot of difficult to become a judge and hear the cases day in day out, day in and day out. So whether you would appreciate that work after becoming a judge or not, so this 3 year will give that unsaid opportunity also. Right. Venus, what do you think now? सर एज यू सेड कि ये जो रिसर्च को भी काउंट, जो जजेस के अंडर रिसर्चशिप कर रहे हैं या फिर क्लर्कशिप कर रहे हैं, उनको भी काउंट किया जा रहा है एज अ प्रैक्टिस। तो सर ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती क्या? ये जो इंटर्नशिप होती हैं, कई गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंटर्नशिप होती हैं या फिर हाई कोर्ट्स की इंटर्नशिप होती हैं, जिन बच्चों ने कंटिन्यू अपने करिकुलम के साथ अपने जो भी 5 ईयर का कोर्स है या फिर 3 ईयर का कोर्स है उसके साथ अगर उन्होंने किया है तो उसको भी कंसीडर किया जाए एज अ प्रैक्टिस? I don't think so. And after doing 13, 14 internships, I can say that it should not be counted. Reason that I've seen 90% of interns don't work at all. They just come, count their times, and then they leave. So I have worked though very hard during my internships, but I've seen those days where I personally also just counted hours. So that should not be counted at all, and especially if you are considering, if you count the experience of second year law student who hasn't read BNSS, CRBC, IPC, if he's assisted with a judge, what knowledge will he gain compared to a person who has completed the entire 5 year law course? So the internship during law school should not be counted at all, for कंप्लीटली sure. एग्रीड ऑन योर पॉइंट सर। बट सर व्हाट आई थिंक कि जो हमें एक्सपीरियंस लेने को बोला गया है 3 साल का, वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है इन इंटर्नशिप के जैसा? No, that will be tested in your interview. The interviewer will have that mindset that, okay, whether this chap has wasted 3 years, or whether this chap has actually utilized those 3 years. So I'm very All sure you will be tested during your interview. right. Sir, honestly, I joined this meeting with a very different mindset. I now, after listening to you, have some, I've changed my thoughts again. I'm stuck at that point. What do we do? So वो एक है, मतलब I think the aspirants will take some time to accept it, but yes, the other I side think too has some valid points. What do you think, Piyush sir? अ वेरी गुड पॉइंट जो की है, आई टेक होम दैट कि सर ने कहा कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। मुझे इस पॉइंट से पहले ये पूरा जजमेंट बिल्कुल ही बेसलेस और इररिलेवेंट लग रहा था, लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट हाँ, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो फैमिली मैटर्स को लेके वो काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात, वे अहेड की, आई बिलीव कि ये सिर्फ और सिर्फ डिले नहीं करता काफ़ी लोगों के ड्रीम को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की अगर बात करें, बट कई लोगों के ड्रीम्स को स्टॉप भी कर देता है और कई लोगों के ड्रीम्स को ख़त्म भी कर देता है। तो मैं 4 कैटेगरीज में अगर डिवाइड करूँ स्टूडेंट्स को, जुडिशियल एस्पिरेंट्स को, एक पहली कैटेगरी जो एकेडमी में घुस चुके हैं या फिर किसी ऐसी जगह घुस चुके हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। Hmm. एज अ मैटर ऑफ कोर्स वो अभी भी, उनके पास अगर कोई रिलेशनशिप है, एडवोकेट है, वो अभी भी सर्टिफिकेट लेके जुडिशियल एंडोर्समेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आरटीआई लग गई कि आप किसी उसमें हैं, तो उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को खतरा हो सकता है। तो उनके लिए तो ये खत्म ही समझो, या फिर उनको छोड़ना पड़ेगा और फिर Hmm. 3 ईयर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा, जो कि बहुत मिनिमम लोग करेंगे, दूसरे
जो 3 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब जो 3 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं या फिर जो 3 साल हो सकता है प्रैक्टिस नहीं किए लेकिन प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने एनरोलमेंट कर दी है, वो क्या कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली एडवोकेट के पास जा सकते हैं और वो क्या एडवोकेट से बोल सकते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो और जुडिशियल ऑफिसर से भी एंडोर्समेंट हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि देखा जाएगा कि आपका तो एक भी वकालतनामा नहीं है। हो सकता है आपने वकालतनामा लगा रखा हो तो दैट्स गुड, लेकिन एक भी वकालतनामा नहीं है तो वो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। थर्ड कैटेगरी जो कि अभी मिडिल में है, जो हाफ हाफ ईयर प्रैक्टिस हो चुका है जिनका, वो कंटिन्यू कर सकते हैं प्रैक्टिस और वो कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई, क्योंकि अभी मल्टी हाफ ईयर जिनका हो चुका है उनके उनके पास 3 स्टेट्स हैं आई गेस। छत्तीसगढ़ जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी और उत्तराखंड जुडिशरी, वो ये 3 स्टेट्स दे सकते हैं। और जब तक ये 3 स्टेट्स दोगे 3 साल प्रैक्टिस खुद खत्म हो जाएगी, आप खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हो, 3 साल प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। अब आते हैं आखिरी स्टेज पे जिनकी जो अभी पास आउट होने वाले हैं और जिनका कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस। तो उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस ये हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में लॉ क्लर्क अलाउ कर दिया है। तो देर इज एन एग्जाम सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क, उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 80,000 को सैलरी है। जुडिशरी का आप नॉलेज उसमें अप्लाई कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क आप बन, इवन सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क अगर नहीं बन पाते हो आप, काफ़ी इजी पेपर होता है, उस नहीं बन पाते हो तो आप किसी भी स्टेट के लॉ क्लर्क, किसी भी जज के अंडर भी लॉ क्लर्क अभी काफ़ी काफ़ी आते हैं वैसे तो, लेकिन किसी भी जज के अंदर आप लॉ क्लर्कशिप कर सकते हो और वो भी आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। और तीसरी बात कि आप अलोंग विथ प्रैक्टिस देर इज अ रूल कि 3 3 घंटे तक आप पढ़ा सकते हो, टीचिंग रूल्स में 3 घंटे तक अलोंग विथ प्रैक्टिस आप पढ़ा सकते हो। तो यू कैन गो टू द कोर्ट और एज अ मैटर ऑफ अर्निंग अलोंग विथ कोर्ट अर्निंग, एज अ मैटर ऑफ अर्निंग आप 3 घंटे की टीचिंग कर सकते हो जिसमें आप थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ये कर सकते हो। या तो आखिरी ऑप्शन उनके पास ये है कि प्रैक्टिस ये छोड़ो और प्रैक्टिस पे लग जाए या फिर किसी लॉ फर्म में कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के पास तो अभी भी टाइम है कि वो चेंज कर सकते हैं या फिर इसी में स्टिक रह सकते हैं, बट 3 साल प्रैक्टिस को रख के। Right. Ayushi, I think you were not here for a couple of minutes. What do you think after hearing सॉरी all the perspectives? मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है. So what do you think now? चेंज तो हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ 3 साल का जो प्रैक्टिस है वो असेंशियल तो था, बट ऐसे यही फीलिंग आती हम ही क्यों, जब क्लैट में अपियर हो रहे थे तब सिलेबस चेंज पैटर्न चेंज हो गया था। अभी कोविड आ जब गया ये था. 2020 ग्रेजुएशन हो रहे थे तो फिर अब ये तो वाई इट्स ऑलवेज अस, बट ठीक है अब इससे कोप अप तो करना पड़ेगा, जो ऑप्शंस मिले हैं लुकआउट करना पड़ेगा उनके लिए। बट आई स्टिल और थिंक वुमेन पार्टिसिपेशन में काफी नो डाउट डिक्लेरेशन तो होगा. और ये चीज़ चेंज होगी क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन जब गिरता हुआ दिखेगा एट सम पॉइंट ये वापस चेंज होगी। तो लेकिन एटलीस्ट आर टेन्योर तो खत्म हो चुका होगा तब तक। हाँ Exactly, sir. That will be again unfair for us. हाँ, तो अपना टेन्योर तो खत्म हो चुका होगा। Okay, interestingly, I would like to give you 2 3 examples that might allow you to appreciate this judgment more. In matrimonial issues, when I graduated, I never understood why so many matrimonial litigations are going on, especially against Devar, Bhavi, and all such stuff. Would you believe that there are so many extramarital affairs among the family members themselves? किसी का भाभी के साथ अफेयर है, किसी का एटसेट्रा के साथ अफेयर है, एटसेट्रा एटसेट्रा. In initial days when I read those things, I thought that that it is 1 out of 100, 2 out of 100. But with experience, I realized that no, this is going like crazy. And after COVID, matrimonial disputes have taken a huge plunge. So a person who is just coming out of law school might not appreciate such difficulties and such heinous things in marriage that is going on. The second example, let's say that I also face a lot of times with judges. If I am appearing in Dwarka court, for example, at 10 o'clock I am arguing before a judge. At 10 o'clock I have a matter in some other court. So that judge might appreciate this thing, that probably okay that counsel is in another court. Even though the electronic medium is available, because I can argue, let's say before you guys, I can't be with anybody else. So lot of judges even today
they do not appreciate this thing that that if a matter is called up, so the lawyer must be there. So a person who has some years of experience would appreciate this difficulty that lawyers keep facing. That at a given point of time, a person can appear at a particular pace, especially after having some good years of practice. So this is a very common issue that we keep facing, that I keep facing even today. That a lot of times I literally have to request judges, or my team has to request judges where my physical presence is required. Because let's say that if other judge does not give me pass over is like that if a matter is called up at 10 a.m. and you say that after half an hour or after 1 hour the advocate will come in. So if a matter is extended for 11 a.m., so that is called passover. So if a passover is not granted, the date will be given for 2 or 3 months. Firstly, there is no problem with the lawyer because he was doing his job. Why does a litigant has to face this thing just because the learned judge has not appreciated this fact? So this is one of the examples. With passage of time you would understand that this thing should have been appreciated by a judge at all. So, and lastly, Mr. Piyush has also addressed that while working with academics, you could still practice because that liberty is granted. So, in that way, that yes, initially if you are the first person who is facing the changes, of course you have to face the heat. But at the same point of time, the opportunities, and the various unsaid and invisible things that you might be getting, you might not appreciate because it's a human tendency that that we always see the dark side first, and then only that we see the brighter side first. Because if you see that that you guys are facing so many problems, the third week of my independent practice saw the date of COVID. So if we keep talking about that, that we are the first person who are facing so many issues, but we are the first people who are also experiencing various new opportunities that have never existed. So it's upon person to person, and yes, there are so many difficulties this batch will be facing, but I'm very sure that if a person sees the balance approach, will definitely appreciate this fact. The last thing that this judgment could have been different, one thing that this should have been implemented at least from 2026 or 2027. Nothing at all, I think I would change for it. That's one thing that I would appreciate. That. So very rarely I become the keyboard warrior. And today was one of those days. I have been typing on LinkedIn, WhatsApp, Instagram. I've been discussing these things with a lot of people. And one of my main concerns was कि अब जो privileged background से हैं या फिर जो जिनके parents let's say जो second third generational lawyers हैं उनको एक advantage मिलेगा because they might not have to go to the courts regularly to get a सर्टिफिकेट, या फिर जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, they would be able to appear for the examination. But now, as Piyush sir also mentioned, and you have also mentioned कि जो opportunities है, be it teaching, be it practicing, law clerkship. So I think now a lot of students will think in those directions कि हम साथ में कैसे manage कर सकते हैं. So I think that is one of the best things of this discussion. Of course, my mindset has changed a bit, and I think I'm not an aspirant. So that makes a difference. Aspirants might need some time to accept that and think in that direction. But I think this will help them. Yes, sir. वन लास्ट थिंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, कीप स्टडिंग। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप एडवोकेसी में एक्सेल कर लोगे, आप कहीं ना कहीं तो एक्सेल कर ही लोगे। Right. So thank you so much for joining in at such a short notice. I'm really glad we could discuss this thing and you know learn from others' perspectives. So thank you so much. My pleasure, my pleasure. Thank you, sir. Thank you for inviting me, and keep your heads up because though it might be quite harsh, but practically it's just added 1 year because it usually takes a couple of years for a young law grad to clear the exam and be there. So consider this, that is just you focus on those 2 years, 3 years of practice, and then accordingly you would be in a much better situation to appear and clear the exam. Because there would be so many people who would be just
not doing justice to their 2 or 3 year of this practice. So if you work well during those 2 or 3 years, you are already much ahead of those people who haven't done anything. So because that will definitely be tested in your interview. So that is one of the edge or one of the things that you could appreciate. And thank you, Rashmi. Thank you, Venus. Thank you, Mr. Thank you Piyush so much. and Ayushi. And Thank you, especially sir. Ayushi, I think that that don't lose your morale. Just see the different aspect. And thank you once again. It's been a Thank you. My pleasure. pleasure. Thank you, My sir. Thank you pleasure. so much. Thank you, Thank you. sir. Thank you.